بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، اس حسین شام میں آج ہمارے درمیان عزت مآب ہمارے ہائی کمشنر آف پاکستان آٹوا میں ہز ایکسلنسی جہاں زیب اکبر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. اس شام کا مقصد کوئی سیاسی یا کسی اور مقصد کے تحت یہ شام منعقد نہیں کی گئی، بٹ ہمارے جی ٹی اے میں پاکستانی کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت، جب دل کی بات آتی ہے تو ایک ہی شخصیت ہے، دل محمد صاحب. انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس پریزنس سے فائدہ لیا جائے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان بہت سے چیلنجز سے گزر رہا ہے، اور اشد ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے اپنے آئیڈیاز، اپنے ویژنز حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کریں اور لاہے عمل بنائیں کہ ہم کس طرح سے پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ اپنی مدد، اپنا ویژن اور اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، تاکہ ہم ان چیلنجز سے what Pakistan is going through right now, we could help in our capacity as a Canadian, how we can pursue our MPs in our areas to see how they can help Pakistan in terms of rehabilitation of a very disastrous earthquake in Balochistan. Can you imagine the 7.7 on the Richter scale? Disastrous. But Alhamdulillah, we are a nation of ancestry. We fought many challenges in the past, and we will, inshallah, make sure that people are looked after, inshallah, Aziz. تو آج کی اس شام کا مقصد ایک تو ان سے ملاقات کرنا، اینڈ سیکنڈلی is to hear what His Excellency wished to brief us a little bit. And if you have any idea or you want to share something with His Excellency, with the staff of the consulate office here, mashallah, all the executives are here. آج کی اس محفل میں ہائی کمشنر صاحب ہمارے درمیان کمیونٹی کی بڑی وہ شخصیتیں موجود ہیں جو پچھلے 40 یا 45 برس سے کمیونٹی کے ساتھ ہیں، پائنیئرز ہیں ہمارے، اور نئی بریڈ کے لوگ بھی ہیں جو آج کل سیاسی اور معاشی طور پر اپنا مقام بنا رہے ہیں. میڈیا کے حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو 2 منٹ میں آپ کو دوں گا. آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے کہ اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے پاکستان میں، سیاسی اس کو نہ بنائیے گا. وی آر ہیئر ایز اے نان پارٹیسن، وی آر ہیئر ایز اے پاکستانی. تو جس کی بھی جو بھی ایفیلیشن ہے، دیٹ از یور پرسنل تھنگ. But to show our respect to His Excellency, he is our guest, and it's a function arranged by Dil Muhammad Saab, a prominent human rights activist, a businessman, entrepreneur, pharmacist by profession, and alhamdulillah, he's a leading figure in GTA. Whenever there is a disaster or something struck Pakistan or community, we find one person in the front line is Mr. Dil Muhammad. I'd like to give you a big round of applause to Dil Muhammad Saab. May I request, I see some senior friends, Janab Colonel Nazar Hussain Saab. Colonel Saab, آئیے. Please
refrain 2 minutes each, because I would like to give as much as input from you. The whole idea is to get you involved in today's evening. Colonel Nazar Saab. अस्सलाम वालेकुम. ये 2 मिनट की स्पीच तो नहीं हो सकती, इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2 मिनट में मैं अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करूं. सबसे पहले बहुत खुशी का मौका है कि अकबर ज़ेब साहब हमारे साथ हैं. अकबर ज़ेब साहब की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि हम सब के लिए आई थिंक वी आर ऑल गोइंग टू मिस हिम वंस ही इज़ अवे फ्रॉम अस. ये ऐसी शख्सियत थी कि ही वॉज एक्सेसिबल टू ऑल. ही वॉज अ मैन हु वॉज वेरी हम्बल. ही वॉज अ मैन हु वुड केयर फॉर एवरीबडी एंड हु वुड ग्लैडली लिसन टू यू विद पेशेंस. तो ये बहुत बड़ी इनकी खासियत थी. एंड आई थिंक ही वॉज अ डायनेमिक and very, very impressive diplomat. We are certainly going to miss him. Now, जो आजकल की सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो खान साहब ने कहा, उसके लिए ब्रीफली मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो हमारी लीडरशिप है उसमें कमी है जुर्रत की, मॉरल एंड फिज़िकल. उसके अलावा और किसी चीज़ की कमी नहीं है. अगर मॉरल और फिज़िकल जुर्रत आ जाए, जिसको करेज कहते हैं हम, फिज़िकल और मॉरल करेज में थोड़ा सा फ़र्क होता है. ये दोनों किस्म की अगर ये जुर्रत हो और ईमानदारी से आदमी मुल्क के लिए काम करना चाहे, मुल्क की बेहतरी चाहे, नहीं है कि हम ये मामलात को सीधा नहीं कर पाते. ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, दिस इज़ ऑल टू माई माइंड अ होक्स. ये कभी कामयाब हो नहीं सकती. वीव गॉट टू रिकग्नाइज कि दुश्मन है हमारे अंदर और उस दुश्मन को हमें ख़त्म करना है. और वो ख़त्म होगा उनके साथ जब जंग होगी, तो उनको लड़ाई लड़ना पड़ेगी उनके साथ. वीव गॉट टू फिनिश देम विद फोर्स. और ये हमारे पास बेइंतहा मिसालें हैं दुनिया की तारीख़ में. लेटेस्ट जो है वो श्रीलंका की है. उन्होंने अपनी इंसर्जेंसी को फोर्स के साथ आर्मी के ज़रिए ख़त्म किया और बड़ा इफ़ेक्टिवली ख़त्म किया. उसके बाद ईरान ने ख़त्म किया. उसके बाद हमारे पास चाइना की मिसाल है. बहुत सारी मिसालें हैं. तो ये कोई वजह नहीं है कि हम बैठे उनके साथ और नेगोशिएट करें. नेगोशिएट भाई क्या करोगे, किसके साथ बैठोगे? उसके साथ बैठोगे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, उसके साथ बैठोगे जो मुसलमान ही नहीं है. कौन सा इस्लाम का काम किया उन्होंने, या इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं? कुछ नहीं. तो बात यह है कि उनके साथ बैठना या ये फैसला करना कि हमें उनसे नेगोशिएट करना है, इंतहा की गलती है और मेरे ख्याल से हमाकत है. तो इट इज़ हाई टाइम कि हम ये रिकग्नाइज़ करें कि इन मामलात को ठीक करने के लिए वी गॉट टू पिक अप सम करेज एंड गो ऑल आउट टू एलिमिनेट दिस इंसर्जेंसी विद ऑल द फोर्स एट आवर हैंड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. दैट वाज कर्नल नज़र हुसैन साहब. देखिए, ये बड़ी फ्रैंक डिस्कशन है. इट्स अ फ्रेंडली डिस्कशन. वी आर सिटिंग लाइक अ फैमिली. Like I said, it's a non-partisan evening. It's a private evening organized by Dil Muhammad Saab. I'm repeating these words, so we should refrain from saying or doing anything which reflects the political agenda of any party or whatever. We are all Pakistani here. We are concerned about Pakistan, and it's our fortune that we have His Excellency among us. I think next person I would like to invite from media. Media has played a crucial role. We have among us the largest Urdu newspaper, Urdu Times, Janab Azam Gondal Sahab. We have Waqar Gondal, and mashallah we have Latafa Siddiqui Sahab. We have Badr Munir Chaudhary from Afghar Pakistan and the representative of Geo Television. मैं दरख्वास्त करूँगा लताफ़ा सिद्दीकी साहब से कि आएँ और 2 मिनट अपनी ख्यालात का इजहार करें. लताफ़ा सिद्दीकी साहब is involved with Your Excellency with the Voice of America
and also he publishes English language Canadian Asian News, very popular English newspaper. आइए तशरीफ लाइए. हम लोग तो हिज एक्सीलेंसी हमारे हाई कमिश्नर साहब को सुनने आए थे. ये नहीं मालूम था कि हमें भी कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि बशीर साहब कह रहे हैं, ये हमारी आपस की बात है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हो सकती हैं. हमारे जो कंसर्न है वो अब हम अपने हाई कमिश्नर साहब से डिस्कस कर सकते हैं. और मेरा तजर्बा ये कहता है कि बहुत सारे हाई कमिश्नर्स आए हैं. इज़ द टॉप डिप्लोमेट इन कैनेडा ऑफ कोर्स. तो मुझे जो अकबर ज़ेब साहब ने जितना इम्प्रेस किया है, जितने शराफत इनके पास है और जितनी तमीज़ तहज़ीब है, मेरा ख़्याल है शायद दूसरों के हिस्से में ना आती हो. लेकिन बहरहाल जो भी यहाँ डिप्लोमेट आए हैं वो न सभी बहुत अच्छे रहे हैं. लेकिन मैं जो अपना कंसर्न वेरी ब्रीफली 2 मिनट के लिए कहा गया है, मैं अगर उस सब्जेक्ट को न जानता होता तो शायद ना करता. लेकिन मैं अपने हाई कमिश्नर साहब से शेयर करूंगा कि जो IMF का इशू है ये बड़ा सीरियस है. पहली बात तो ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब IMF को ग्रांट दी जाती है तो 1% पे इंटरेस्ट देते हैं. हमने 4% पे लिया. और अब हमें, चूँकि इनकी कंडीशंस आर सो टफ़, वो समझते थे कि पाकिस्तान की बैड इकानमी है तो उससे फ़ायदा उठाया उन्होंने, और हमें हर 3 महीने के बाद गैस और बिजली पे कीमत बढ़ानी पड़ेगी 5%. और जो अभी आपने एक थोड़ा सा टेलर देखा है, ये प्राइस शायद वापस आ जाएगी. ये जो इतना कंसर्न है, मैं ही नहीं बल्कि सारे पाकिस्तानी जो यहाँ बैठे हैं, जो पाकिस्तान में, वो भी परेशान हैं कि इस बहरान को कैसे दिया जाए. और मैंने बस अपनी बात ख़त्म करूँगा कि एक टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम था, एक होस्ट साहब कह रहे थे कि कराची में 7.4 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, लेकिन वो खामोशी से गुजर गया, थैंक गॉड. लेकिन शायद ये जो प्राइस का और IMF का जो अर्थक्वेक आया है, इससे निमटना ज़रा मुश्किल होगा. बस यही मेरा कंसर्न है. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया लताफ़त सिद्दीकी साहब. We have a good news to share. You know that the national carrier, Pakistan International Airlines, is bringing the 4th flight. Inshallah, I believe the 23rd of November, Muazzin Saab? 7th of November, we'll have a 4th flight, direct flight from Toronto to Pakistan. At current, you know that we have 3 flights, Tuesday, Friday, and Sunday. So the 4th flight will be flying, inshallah, on Thursday as well. So you have 4 days during the week to fly to Pakistan. Support your national carrier. मैं चाहूँगा कि अब चूँकि बात हो रही है नेशनल कैरियर की, हमारे कंट्री मैनेजर जनाब मोइज़ुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं. उनसे चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और थोड़ा सा हमें बताएं, ब्रीफ करें. हिज एक्सलेंसी अकबर ज़ेब साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टोरंटो आने का और इधर टाइम देने का. हम लोगों को दिल साहब की दावत पे आप आए और दिल साहब की मेहरबानी कि हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया उन्होंने, और एक अच्छी शाम आपके साथ हम लोग गुजारेंगे और एक अच्छी यादें लेकर जाएंगे. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जो कि ज़िक्र किया उन्होंने, मैं PIA की बात अभी नहीं करूँगा. मैं ये समझता हूँ सारी मुश्किलात का एक हल है, सिर्फ़ एक हल. आज हम अपने अमाल सही कर लें. जिस चीज़ को हम अपने लिए बुरा समझते हों या दूसरे के लिए वो अपने लिए भी बुरा समझें, हमारा मकसद, हमारा मसला ये है कि जो चीज़ दूसरे के लिए बुरी है वो अपने लिए अच्छी हो जाती है. तो आज हम अहद करें सब लोग कि जो चीज़ बुरी किसी के लिए भी है वो मेरे लिए भी है, जो अच्छी दूसरे के लिए मेरे लिए भी है. और अपने अमाल का शुरू जो इसका करें अपने घर से करें. हदीस कुरान हर कोई बड़े रवानी से बयान कर रहा होता है, कितने लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं जो वो बयान कर रहे होते हैं. सिर्फ़ एक दफ़ा सोचें और आज अपने अमाल सही कर लें. मैं कसमिया ये बात कहता हूँ कि 99.999% प्रॉब्लम्स आपके मुल्क की ख़त्म हो जाएंगी और अपने कम्युनिटी की भी ख़त्म हो जाएंगी, अपने मुल्क की भी. और जहाँ तक PIA का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बुरे हालात में चल रही है, फिर भी इन हालात के बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी करेज दी कि हमने डिसीजन लिया 4थी फ़्लाइट शुरू करने का. और वो ये नहीं कि ओवरनाइट हुआ, 3-4 सालों से स्टडी करते चले आ रहे थे और हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें हमारी कम्युनिटी ने दी.
تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا, کینیڈین گورنمنٹ سے اجازت لی, جو کہ یہ نہیں دیتے 3 سے زیادہ کی, لیکن ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے انہوں نے ہمیں 5 فلائٹوں کی اجازت دی ہوئی ہے. چوتھی ابھی ہم شروع کر رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے سال اگر سپورٹ رہی تو 5ویں فلائٹ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. Who says that we don't have the potential? ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ٹیبل پہ یہی باتیں کر رہے تھے. We have everything, resources. All we need is a leadership. Inshallah, Pakistan has a great potential. Keep your faith and hope in Allah subhanahu wa ta'ala, in our ability. We will come out, inshallah, in flying colors. اب میں کونسل جنرل آفس کے جناب گوندل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. آئیے گوندل صاحب, and say few words. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام. میں کونسلیٹ کی طرف سے ہائی کمشنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں دل محمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت شام آج منعقد کی. تو اب جو ہم سارے پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو حکومت کا موقف ہے اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے, وہ ہائی کمشنر صاحب اپنے خطاب میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو میں بس اتنا ہی مختصراً. شکریہ. ہلو, ٹھیک ہے صابر, یہیں رہنے دو اس کو. اب میں گزارش کروں گا جناب ہمارے سی پی ایف اے, ویری پرومیننٹ آرگنائزیشن, کینیڈا پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن, مسٹر احسن قریشی جو ہمارے صدر ہیں, تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بشیر خان صاحب سرپرائزز دیتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی کچھ بولنا پڑے گا. شاید دل صاحب آپ نے کچھ کیا. اکبر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, یو آر موسٹ ویلکم, وی آلویز لائک یور پریزنس ہیئر. پاکستان کی جو سچویشن ہے, میں پتہ نہیں اب کیا میں کہوں. ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, سوری موئی صاحب, لیکن یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ تو دعائیں تو پتہ نہیں پچھلے 1400 سال سے مانگ ہی رہے ہیں. اس کے لیے تو جو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ جب تک سٹرکچر بنے اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا پریکٹیکلی انفورس کیا جائے تب ہوتا ہے. کرنل صاحب نے بات کی, آئی ایگری ود ہم. یہ اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, 40 سال مجھے ہو گئے, ہمیشہ پاکستان کا کہہ لیجئے جو بھی خیال رہتا ہے, دل رہتا ہے. میری وائف کی فیملی ہے, 45 ایئرز ہو گئے, ہمیشہ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی چلتی ہیں آل اوور دا ورلڈ. اٹ ڈزنٹ ہیپن کہ دیز پیپل اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ, بٹ ایوری بڈی شوڈ کیپ آن ڈوئنگ سم تھنگ. I remember somebody mentioned few years back that they said this guy, he was working in office, he was not working. He was saying, Pakistan mein halat bade kharab. Every little time he is going here, going there, Pakistan mein halat bade kharab. Pakistan mein halat bade kharab. تو ایک سینئر سے بزرگ انہوں نے کہا, اس کی ذرا کمر تھپ تھپائی, انہوں نے کہا دیکھو بیٹا 1947 میں پاکستان میں حالات بڑے خراب تھے, چلتا رہا. 58 میں پتہ نہیں مارشل اللہ آیا, پاکستان میں حالات بڑے خراب تھے, چلتا رہا. ابھی بھی اور بھی حالات ہیں, تم اپنا کام کرتے جاؤ, بیٹھے نہ رہو کہ حالات خراب ہیں اور جب بیٹھ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ چیز ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. اپنی طور پہ کہہ لیں کہ ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ جو انرجی سیکٹر میں تھا، میں اور میرے دوست ہیں، ہم لوگوں نے شروع کیا پاکستان میں سولر انرجی پاور کا بزنس. مجھے چوٹ لگی تھی، اس لیے ذرا میں 4 مہینے سے یہاں ہوں، لیکن میرے پارٹنرز وہی ہیں. الحمدللہ it's going ahead. We have not touched the government yet because we feel that first we will, get our feet wet, well anchored, then we'll see. But thank God, around 45 projects, chote hamare, already they are on, and we are going mostly in tube wells. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھوں گا سبھی لوگ جو ہیں نا اپنی اپنی کوشش کریں. سر دعائیں مانگیں، اچھی بات ہے، ہم سب مانگتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہونا ضروری ہے. سوری. پاکستان از ون آف دا بیسٹ پلیس ٹو انویسٹ منی. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، یار بشیر بھائی کہاں پیسے لگواؤ گے، کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا یار پاکستان دنیا کا ایک بہترین ملک ہے، اگر آپ نے انویسٹ نہیں کرنا مگر دوسروں کو تو ڈسکریج مت کرو یار. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ یو ہیئر اینڈ سی اٹس اے میڈیا کیمپین اگینسٹ پاکستان. پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں، but inshallah we'll come out. We will, inshallah. We're a nation of resilience, and we will fight all these challenges, inshallah, in a short period of time. اب میں دعوت دوں گا جناب مشتاق انجم صاحب کو، جو ہماری کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں اور بڑے سرگرم رکن ہیں ہماری ٹورنٹو کی کمیونٹی کے، اور ابھی حال ہی میں یہ پاکستان سے یہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹرپ لگا کر واپس تشریف لائے ہیں پچھلے جمعے کے روز، اور اتنے کھانے کھائے انہوں نے، اتنا انجوائے کیا انہوں نے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. آئیے مشتاق صاحب، اور سچ بتائیے پاکستان میں کتنا انجوائے کیا آپ نے؟ بشیر صاحب نے اچانک بلا کے مجھے تھوڑا سا حیران کر دیا ہے. پاکستان میں تو جو چل رہا ہے جی وہ پچھلے 60 سال سے چل رہا ہے، اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی رو رہا ہے لیکن ہر آدمی کھا رہا ہے، اور کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے. وہاں آپ کسی بیکری میں جائیں، رش لگا ہوا ہے، وہاں آپ کو باری نہیں مل رہی. کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، آپ کو 20 منٹ کی ویٹ ہے پارکنگ لاٹ میں. پر ہیڈ میرے خیال میں منیمم جو اچھے ریسٹورنٹس ہیں 700 روپیز لیتے ہیں، لیکن اتنا رش ہے اور لوگ رو رہے ہیں. مہنگائی ہے. مچھلی والے کے پاس ہم گئے، 118 نمبر مجھے ملا. آپ اندازہ لگائیں. تو بہرحال ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے جی، انتہائی خلوص سے، انتہائی نیک نیتی سے، اور اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کا کچھ نہیں بگڑنے والا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. Mushtaq Saab is a very successful travel agent, and they cater for the Hajis and Umrah پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے. اور سب سے بڑا گروپ کینیڈا کا ان کی فالکن ٹریول ارینج کرتی ہے. کیپ اپ دا گڈ ورک مشتاق صاحب. اب میں چاہوں گا کہ میڈیا میں سے اعظم گوندل صاحب ہمارے تشریف فرما ہیں. آئیے تشریف لائیے. اردو ٹائمز اور عوام کے یہ ایڈیٹر ہیں، اور بڑی کامیابی سے انہوں نے تھوڑے عرصے میں اس اخبار کو، جو کہ پچھلے 27-28 برس سے پورے شمالی امریکہ میں پبلش کیا جاتا ہے. اعظم گوندل صاحب. عزیز مہمان کو ویلکم کرتے ہیں کہ اس کے اعزاز میں الحمدللہ اتنی دل بھائی نے اچھی محفل سجائی ہے، تو بڑی خوشی ہے ان سے مل کے، اور ان کے بارے سن کے اور زیادہ خوشی ہوئی ہے. اتنے اچھے انسان ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے ایمبیسڈر کا کام کر رہے ہیں. باقی پاکستان کے بارے سب لوگ اپنے اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے بلوچی بھائیوں کی مدد کرے کہ ان پہ بہت کڑا وقت آیا ہوا ہے. تو ہمارے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں، اللہ پاک اس کے لیے بہتری فرمائے، اور جو کچھ ہو سکے اپنے حال سے حصہ ڈالنا چاہیے. تھینک یو.
थैंक यू वेरी मच आजम गोंदल साहब. मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा. असगर गुलू को मैंने गोंदल कह दिया था. असगर साहब बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा. सॉरी. अब मैं जहमत दूंगा, हमारे दरमियान हमारे मीडिया के बहुत से हमारे दोस्त और कोलीग्स बैठे हुए हैं. नईम चौधरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ. नईम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. धरती सोनी पाकिस्तान, very prominent television program, comes on City and now on Checks. बदर मुनीर साहब अखबार पाकिस्तान के हमारे एडिटर हैं और थोड़े अरसे में इन्होंने बहुत मेहनत करके अपना एक मकाम बनाया है और जियो टीवी पर अभी हाल ही में इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ओ कनाडा. मैंने मुबारकबाद देना चाहूँगा. मुझे खुशी होती है जब कोई मेरा दोस्त अपनी फील्ड में तरक्की करे. तो बदर भाई, आपके ख्यालात. बहुत शुक्रिया बशीर खान साहब, आपको फॉलो करते हैं. आप इतना आपका एक जद्दोजहद का सफ़र है और कामयाब सफ़र है और ये मंजिलें आप मज़ीद तय करते रहें. बहुत शुक्रिया बुलाने का. मैं सबसे पहले तो दिल साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने आज की महफ़िल सजाई. सफ़ीर पाकिस्तान जनाब अकबर ज़ेब साहब के लिए यकीनन जैसे लताफ़ साहब ने कहा कि काफ़ी हमने सफ़ीर देखे हैं, लेकिन एक शरीफ नफ्स और बहुत ही अच्छा नफीस किस्म के शख्सियत के मालिक अकबर ज़ेब साहब. हमेशा अच्छा लगा कि पाकिस्तान बल्कि हुकूमत पाकिस्तान, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो वहाँ के नुमाइंदे हैं वो यहाँ जब तशरीफ़ लाते हैं तो हमें रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे लगते हैं. हुकूमतों से तो इख्तलाफ होता रहता है लेकिन रियासत से कोई इख्तलाफ नहीं है और आपका एहतराम, मोहब्बत और आपसे जो इखलास है हमारा, वो हमारे दिलों में बसता है. दूसरा, पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है. मायूसी की बातें तो आज नहीं होनी चाहिए. 24 घंटे पड़े हैं हम पाकिस्तान की ख़बरें सुन के मायूस होते हैं, तकलीफ़ होती है. लेकिन आज जो है वो जहाँ सोहेल राना साहब बैठे हों वहाँ तो म्यूज़िक की और मोहब्बत की बातें होनी चाहिए थी. आखिर में अमजद इस्लाम अमजद का एक दो शेर जो हैं वो मैं सुना के मायूसी की बजाय मोहब्बत की बात करूँगा कि मोहब्बत ऐसा नगमा है, ज़रा सी झूल हो लय में तो सुर कायम नहीं रहता. मोहब्बत ऐसा नगमा है, ज़रा सी झूल हो लय में तो सुर कायम नहीं होता. मोहब्बत ऐसा पौधा है तब भी सब्ज़ रहता है कि जब मौसम नहीं होता. और मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता. बहुत शुक्रिया. थैंक यू बदर भाई. हमारे दरमियान हमारे कौंसल ऑफिस के अकबर आदिल साहब भी हम तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे बहुत ही मुखलिस और जिस मेहनत से, लगन से ये कम्युनिटी को अपनी खिदमत देते हैं. शाह साहब, कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू फॉर दैट. अब मैं जनाब राष्ट्री साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें. राष्ट्री साहब, ही इज़ a gentleman who has sitting on many committees, both provincial and federal. It's a long list. I don't have time to explain everything. आइए तशरीफ़ लाइए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए. He is a future candidate for the Liberal Party of Canada, just to let you know, at the Mississauga Streetsville. बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई. Good evening, ladies and gentlemen. It definitely is my honor to be addressing you all and welcome you, Your Honor. We as Pakistanis, yes, we are very proud that we are from that part of the world. We are very proud that we call that place as our motherland, and it would always be called our motherland because motherlands can never be forgotten. मेरा ख्याल है कि ये मेरी कमाईगी है कि मैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर भी कोई कमेंट पास कर सकूं. अभी चंद महीने पहले ही 18-20 करोड़ अवाम ने वहाँ पर अपने नुमाइंदे चुने हैं और मेरा ख्याल है कि वो नुमाइंदे इस काबिल हैं कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. सो वी कैन ओनली विश देम बेस्ट ऑफ लक. और बीइंग अ कैनेडियन,
My only request to the staff at the consulate is, please tell us what can we do for Pakistan, and we would always be prepared to do that. Thank you. थैंक यू वेरी मच. हमारी मीडिया से सैयद तौसीफ़ जो उर्दू पोस्ट के एडिटर हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें. 2 मिनट हैं, आइए तशरीफ़ लाइए. सैयद तौसीफ़ हैं, उर्दू पोस्ट, बहुत ही मेहनती जर्नलिस्ट हैं, हमेशा कोशा रहते हैं कम्युनिटी की खिदमत के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया खान साहब और दिल साहब. हम वेलकम कहते हैं अपने हाई कमिश्नर को, और ओटावा में पाकिस्तान की भरपूर तरीके से और बहुत उम्दा तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं. मैं थोड़ी सी देर के लिए कुछ प्रोग्राम में कहीं और गया हुआ था, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं लेट हो गया. दिल साहब ने पहले कहा था, और हाई कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं थोड़ा लेट भी आया, माज़रत चाहता हूँ एक दफ़ा फिर. दिल साहब ने जो प्रोग्राम ये तरतीब दिया आज का हाई कमिश्नर के एजाज़ में, पाकिस्तानी जितने भी डिप्लोमेट्स यहाँ पर टोरंटो में और ओटावा में हैं, बिलाशुबा इन्होंने कम्युनिटी और अपने मुल्क को सर्व किया. हम तहे दिल से उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो कभी कभार यहाँ भी आते हैं, ओटावा से ऑल द वे. और तो अब मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी आप गाड़ी चलाएं और शाम का वक्त हो, तो एक बड़ी सुरीली आवाज़ आपके कानों में आती है, आपकी समातों में अपना रंग घोलती है, और वो रेडियो आप जब सुनते हैं, उनका दिलचस्प अंदाज़, खूबसूरत गीतों का मिलाप. मेरी मुराद है मकबूलियत रखने वाले नाज़मुद्दीन मकबूल से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें. मेरी गुजारिश होगी कि इसे 2 मिनट तक रखिएगा. और सोहेल राना साहब चूँकि लेजेंड हैं, उन्हें इजाज़त दी मैंने, लेकिन ये है कि दूसरे जो हमारे स्पीकर हैं, प्लीज़ टाइम को देखिएगा ज़रा. अस्सलाम वालेकुम. जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर ऐसे भी हैं. तालियां बजाइए. बहुत सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के ताल्लुक़ से. पहली बात तो है कि दिल मोहम्मद साहब का मैं भी मशकूर हूँ. आइकॉन ट्रैवल एक नई ट्रैवल एजेंसी खुली है जो दिल साहब ने खुली है, उसमें हम भी काम करते हैं. कुछ लोग अभी तक उसकी सर्विस से फ़ायदा उठा चुके हैं इंशाल्लाह. तो पाकिस्तान के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें लताफ़त भाई ने की, और बदर साहब ने की, तौसीफ़ साहब ने की, आज़म साहब ने की. तो एक शेर में बात ख़त्म करके इजाज़त चाहूँगा कि वो कौम है जिसके सामने ये ख़्याल है, तूफ़ान के नग़मे हमसे सुनो, हम साज़े नवाए तूफ़ान हैं, हर मौज बलाए दौरां पे हम ज़ीस को रक़्सां करते हैं. मंजिल का निशान हम पूछें क्या, हम खुद ही निशान मंजिल हैं, अरमान बहारां कौन करे, तख्लीक़ बहारां करते हैं. शुक्रिया. मैं चाहूँगा कि आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी को बुलाऊं, उससे पहले आज हमारे दरमियान एक और लेजेंड शख्सियत मौजूद है, और ये हमारे हीरो भी हैं, हमारे एक अजीम लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर भी हैं, एम्बेसडर ऑफ पीस. सोहेल राना साहब हमारे लेजेंड. आज जाने की ज़िद ना करो, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, गिराना भी चाहो गिरा ना सकोगे. जीवे जीवे पाकिस्तान, ए निगारे वतन तू सलामत रहे. एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं चाहूँ इनके गीत बताना आपको तो शायद घंटा मुझे चाहिए, लेकिन मैं इतना वक्त नहीं है. मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और कुछ लफ्ज़ हमारे हाई कमिश्नर के लिए और पाकिस्तान के लिए कहें. जनाब सोहेल राना साहब. सबसे पहले तो मैं दिल मोहम्मद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. जब भी इनकी कोई अच्छी महफ़िल मुनक़्क़िद होती है तो इस नाचीज़ को भी याद कर लिया करते हैं. और आज चूँकि हमारे आपके दरमियान
سفیر صاحب اوٹاوا سے تشریف لائے ہیں، تو میرے لیے بھی یہ بات باعث فخر ہے کہ اس محفل میں جہاں وہ موجود ہیں میں بھی موجود ہوں۔ ہمارا سفارت خانہ اور ہمارا کونسل خانہ دنیا میں جہاں پر بھی یہ ہیں خدمت کر رہے ہیں اپنی، اور ایسی خدمت جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ مجھے مائکروفون دیا گیا ہے تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں جب بھی پاکستان سے باہر گیا ہوں تو میں سب سے پہلے، چاہے میں سفیر کو یا کونسل جنرل کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میں ٹیلی فون کی ڈائریکٹری میں ان کا نمبر دیکھتا ہوں اور ان سے رابطہ قائم کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، یہ میرا نام ہے۔ اور جب بھی میں پاکستان واپس جاتا ہوں تو اپنی رپورٹ میں، جو کہ میں منسٹری آف کلچر کو، منسٹری آف فارن افیئرس کو اور منسٹری آف انٹیریئر کو ہمیشہ بھیجتا ہوں، وہ چاہے میرا نجی دورہ ہو یا میرا گورنمنٹ کی طرف سے اسپانسرڈ ہو۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو زیب صاحب آپ کی اجازت سے یہ 2 لفظ، میرا جانا ہوا چین، یہ بات ہے 1985 کی، تو وہاں ایک سمپوزیم تھا آن پیسیفک میوزک، تو کوئی 30-35 کمپوزرز اس خطے سے وہاں موجود تھے، مجھے بھی دعوت دی گئی تھی تو میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن سوائے ایک جو کہ ترکی کمپوزر تھے جن کو میں جانتا تھا، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا تھا، اور چین میں میری کسی کے ساتھ شناسائی بھی نہیں تھی، اور وہاں ہم نے 10-12 دن گزارنے تھے۔ تو میں نے وہی کیا، ٹیلی فون کی ڈائریکٹری اٹھائی اور میں نے فون کیا، تو رابطہ میرا ان کے پی ایس سے ہوا۔ میں نے کہا جی میں سہیل رانا عرض کر رہا ہوں، کیا میں سفیر صاحب سے بات کر سکتا ہوں اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں کون سفیر صاحب ہیں؟ ان کا جی اکرم ذکی صاحب جو ہیں وہ میں آپ کی بات کراتا ہوں۔ ان کو تھوڑی دیر میں ذکی صاحب لائن پر تھے، میں نے کہا حضور میں سوا خراشی کی معافی چاہتا ہوں، آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کال آن یو۔ تو کہنے لگے رانا صاحب عجیب اتفاق ہے، میں آج شام پاکستان جا رہا ہوں کیونکہ جو پریمیئر جو ہیں چائنا کے وہ وزٹ کرنے والے ہیں 1 مہینے میں، لہذا مجھے بریفنگ کے لیے وہاں پہنچنا ہے، لیکن چونکہ آپ نے مجھے فون کیا ہے تو میں 2 منٹ کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ میں یہ بات بھول نہیں سکتا کہ وہ سفیر جن سے میں زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا، میری ایک کال کے اوپر وہ فوراً ہماری ہوٹل آئے، اور میرے جتنے کلیگ سے جہاں سے بھی ہمارے تھے سب کے سب حیران تھے کہ تمہارا سفیر تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں ان سے ملا، انہوں نے بڑے خلوص سے حوالہ دیا کہ جن میری کاوشوں کو وہ جانتے تھے۔ پھر مجھ سے کہا رانا صاحب میں نے اپنے پی ایس کو یہ باقاعدہ انسٹرکشن چھوڑے ہیں کہ جب تک آپ یہاں پر ہیں، جب آپ کو گاڑی چاہیے ہوگی تو وہ آپ کے پاس وہ آ جائے گی، اور جہاں آپ کو جانا ہوگا وہ لے جائیں گے، اور روز صبح کا ناشتہ سفارت خانے سے آپ کے پاس آیا کرے گا، اور شام کا کھانا کہیں نہ کہیں آپ کا سفارت خانہ میں ہوا کرے گا، کیونکہ جو وہ چائنا کا جو ہماری ایمبیسی ہے وہ پورا ایک بہت بڑا احاطہ جیسے قلعہ ہوتا ہے، تو ایسا سفارت خانہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں وہاں 14-15 دن رہا اور مستقل سفارت خانے کا میں مہمان رہا، اور مجھے جو خلوص میرا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، میں جب واپس آ رہا تھا تو جہاز کے اوپر میرے ایک سینیٹر ملے جو میرے بڑے عزیز دوست تھے۔ ارے سہیل تم یہاں کب سے؟ میں نے کہا 15 دن سے۔ نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا تم بھی نظر نہیں آئے۔ کہ نہیں ہم BCCI کے ساتھ ہماری ایک میٹنگس تھی، یہاں کا جو سفارت خانہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کیوں کیا ہوا؟ کہ nobody came to meet me, nobody came to see me۔ میں چپ رہا۔ وہاں پاکستان پہنچے، میں نے اپنی رپورٹ جو تھی بھیج دی، اور جو مجھے محبتیں ملی تھیں سفارت خانے سے اس کا میں نے ذکر کیا۔ تو 4-5 دن کے بعد اس زمانے میں ہمارے رفعت مہدی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا سہیل
तुम्हारी रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा मरला हल कर दिया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे जो सेनेटर साहब जो थे उन्होंने एक बहुत सख्त किस्म का ख़त लिखा है हमारे मिनिस्टर साहब को, और उसकी कॉपी उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एंडोर्स की है कि हमारा सफारत खाने को क्या हो गया है, दे डोंट पे ड्यू रिस्पेक्ट्स टू अस। मैं वहाँ रहा 15 दिन, एक भी शख्स मुझे नहीं आया, ना किसी ने हमारा जिक्र किया, ना हमारा खबर है। कहने लगे तो मैंने ये किया कि तुम्हारी जो रिपोर्ट थी वो अटैच करके मैंने प्रेसिडेंसी को भी भेज दी और उनकी मार किया, तो उसके बाद सब लोग खामोश हो गए। तो तुमने जो रिपोर्ट हमें भेजी थी वो हमारे बड़े काम आई। मैंने कहा रफ़त भाई, जो मोहब्बत और जो खुलूस मुझे सफारत खाने से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मिलता रहा है, उसको तो मैं ज़िंदगी भर भुला नहीं सकता, और ख़ास तौर पर जो मुझे चाइना से मिला है। तो ये है हमारा सफारत खाना और ये है हमारा कौंसल खाना। अब चूँकि पाकिस्तान की बात हो रही है तो दो बातें और कहना चाहूँगा। हुजूर इजाज़त है आपकी कि आई होप आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम। तो एक गीत है जो मैंने लिखा था, कभी बच्चों से गवाया था, लेकिन मैं बात बच्चों के तवज्जुह से बड़ों को मुखातिब किया करता था। तो वो था कि दिए जलाए रखें, दिए जलाए रखें, अपने घर के दिए दरीचों से है घर की आन बान, अपना घर ही पाकिस्तान, अपना रोशन पाकिस्तान। एक दिए पे आँच आए, एक दिए पे आँच आए तो अर्श हिल हिल जाए। हुजूर, एक दिए पे आँच आए तो अर्श हिल हिल जाए, सारे जल उठें तो घर में नूर ही नूर हो जाए। ये दिया हमारी जान, हर दिए पे हम कुर्बान, अपना घर ही अपना रोशन पाकिस्तान। तो हमारा पाकिस्तान जो है वो रोशन पाकिस्तान है। उसके बारे में जो अल्फाज लोग कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ये हो गया, वो हो गया, तारीख़ उठा के देखिए तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने तकलीफ़ें और परेशानियाँ नहीं देखी। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, एक टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू किया और पाकिस्तान पे गुफ्तगू की। तो साहब, राना साहब, पाकिस्तान में इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपके ख़्याल में क्या हाल है? मैंने कहा पहली बात तो मेरा शोबा नहीं है, मेरा शोबा मौसीकी का है या शायरी का है और अदब का, लेकिन चूँकि पाकिस्तान मेरी भी जान है, मेरा घर है, मेरा देश है, मेरा पाकिस्तान है, पहले वो है, बाद में कनाडा है। आपने पूछा तो एक बात कहूँ, हम भटक गए हैं, हम भूल गए हैं, हम बहक गए हैं, हमें एक रहनुमाई की ज़रूरत है और हमें हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। मैंने कहा पाकिस्तान का एक ही हल है और वह है सीरतुन नबी। अगर हम उसको फॉलो करें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के सामने सीरतुन नबी रख दी जाइए कि क्या आपको इससे इख्तलाफ है? नहीं, तो जो वो करते रहें रसूल पाक वो कीजिए, तो यह हल है आपका। हम मुसलमान हैं तो फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे सरकार ने जिस वक्त मक्के पर जो फतह मक्के की हुई, उसके बाद जो उन्होंने जो सरमन्स दिए और उस पर जो कुछ उन्होंने पैगामात दिए, वो क्यों हम भूल बैठे हैं? वो अगर हम याद, जो फतह मक्के की हुई, उसके बाद जो उन्होंने जो सरमन्स दिए और उस पर जो कुछ उन्होंने पैगामात दिए, वो क्यों हम भूल बैठे हैं? वो अगर हम याद करें, सारी पॉलिटिकल पार्टी याद करें और सारी अवाम याद करें, तो हमें मालूम हो जाएगा हमें एतदाल की ज़िंदगी गुजारनी है और किसी के साथ मुकाबला नहीं करना है। तो हर चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझको सुना। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इज़्ज़त माब हाई कमिश्नर साहब पिछले 40 बरसों में कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में मुंसलिक होने की वजह से आई हैव सीन मैनी एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, लेकिन इस वक्त जो स्टेटस हमारे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जनाब इज़्ज़त माब जहाँ जब अकबर साहब की वजह से मिला है,
He is bilingual, speaks fluent French, and that helps in Canada. तो उस वजह से इन्होंने जो अपना एक डिप्लोमेटिक कोर में एक मकाम बनाया है, ना सिर्फ अपने लिए हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए एज अ होल। तो मैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इस मौके पर हमारे आज के शाम के होस्ट को बुलाने से पहले मैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब जहाज़ेद अकबर साहब से गुजारिश करूँगा कि आपकी बहुत सारी तालियों में वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें और अपनी मोहब्बतें हमें दें। जनाब अकबर ज़ेब, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में it might be appropriate for me also to take 2 minutes, like everyone else has. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा दिल मोहम्मद साहब का, और जिसकी वजह से आज की ये महफ़िल सजी है, और शुक्रिया भी आप लोगों की मोहब्बत का जो कि बार बार मुझे टोरंटो ले आती है। Let me say that sort of Toronto is a unique place in the world, not just in Canada. It symbolizes Canada's multiculturalism. This is a place where most of the Pakistanis are residing presently and doing extremely well. पाकिस्तान के हालात पे तो काफ़ी लोगों ने बातें कही हैं, और मैं समझता हूँ कि हर एक ने अपने दिल से कही हैं। तो I agree with a lot of things that has been said about Pakistan. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि this is a very difficult time in our history, in the history of our nation. I don't think we've had such a difficult time before. We've been through a lot, of course. The time of partition was very, very difficult. We've had other challenges, but अभी जो हमारे पे जो मुसीबतें और मुश्किलात जो आन पड़ी हैं, मेरे ख्याल में we've never witnessed this in our history before. And the suggestions that we've received, I think, from some of you, which represents a Canadian Pakistani point of view, I think will be well taken. Let me mention a few things that have been mentioned. Certainly the IMF का ये है कि it's a bitter pill that we have to swallow. जैसे Ayatollah Khomeini ने कहा था कि making peace with Iraq is like drinking poison. So this is something that has to be done at this stage in our history. And as I said, the government of Pakistan doesn't like the IMF loan. I don't think the people are very much for it. But this is a time when you have to make temporary economic measures in order to put your economy back on rail. But as I said, this is a temporary measure that we have to take. And once the economy is strong enough, then you won't resort to the kind of loans that we've taken from the IMF. Security, of course, is the primary preoccupation of the government, because that is the primary duty of any government in any country. But because of the situation in Afghanistan, we face great difficulty in terms of controlling the security situation in Pakistan. But let me, जैसे कि कुछ लोग आपने कहा है, this is a situation that has to be dealt with head on. But every government, sort of, once it comes to power, tries to resolve it through different methods. The first method, of course, is through peacefully and through negotiations. But जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है, these are people that are out to destroy the fabric of our society.
ये इस बात समझ नहीं आती कि ये कैसे मुसलमान हैं जो मस्जिदों में बम रखते हैं, जो कि बाज़ारों में बम रखते हैं. One doesn't know their grievances. They might have grievances against the West. We've up to now lost at least 80,000 people in suicide bombings. 5,000 of our security forces have been killed. So this is the kind of situation we are facing. Of course, there's great challenges in the economy, partly because of what's happening in the world these days. So the present government that has come to power, it may be a little soon to pronounce any verdict. I think the question remains open, but there is an effort to try and bring all these problems under control. And I think, as some of you have said, you need to keep up hope. उम्मीद हमें रखनी चाहिए. Or belief, let's say, in our destiny. मैं बस ये बात कहूँगा कि हमारी जो diaspora has, particularly in Canada, I think that is greatly valued. They have enormous contributions to Pakistan's development, to Pakistan's well-being. Whenever, जब भी पाकिस्तान में कोई बुरा वक्त आया है या मुश्किल का वक्त आया है, तो all of you have come together as one, regardless of party affiliations, regardless of ethnicities, regardless of sects. So this is my experience, and I think the people of Pakistan are extremely grateful to you, and you have enormous contributions in, let's say, promoting education in Pakistan, promoting Pakistan's health sector. And this is what is enabling Pakistan to develop. This is enabling Pakistan to come out of its present difficulties. तो यही कुछ बातें जो थी मैंने आपसे वो करनी थी. In terms of Canada-Pakistan relations, I think we are on course. This is a special relationship that we enjoy with Canada. After the Canadian withdrawal of forces from Afghanistan, there is some people feel that there may be a lessening of the intensity of the relationship. But as I tell everyone, we now have a community which is 300,000 strong in Canada, and that is our biggest asset. Because of this community, I think our special relationship with Canada will remain, and we will take this relationship forward. Already there have been important strides in the relationship. We have important investments that are in Pakistan made by Canadian companies. We have a fair amount of trade. It's now touching almost $1 billion. We have the investment climate might not be as conducive as it was because of the security situation, but we have a lot of our diaspora Canadians of Pakistani origin who are investing in Pakistan. I think the economy might not be doing well, but the stock market is as high as ever. I think that is one area which has a lot of confidence and where people are putting their money into. I think the property market, all of you would know sort of in Pakistan. I know that a lot of you have invested there. So there are the telecommunication sector. Pakistan will be entering, starting a number of development projects, especially in infrastructure, with China, which is primarily connecting Gwadar to China itself. And that also is an opportunity for Canada and Canadians to invest in Pakistan. So those are the kinds of things that are happening, and we keep on we want to be in touch with our community so that they know exactly what is happening in Pakistan. But of course, let me not say too much, because you people know more about Pakistan maybe than I do collectively.
and you have an interest in Pakistan's well-being, like people living there. So that is the spirit sort of that we appreciate, and I'm again sort of thankful to Dil Mohammad Saab, to Khan Saab, and to a number of you, especially Sohail Rana Saab, sort of who's a legend by any standard, and who's taken the time out to come and be with us this evening. So I think I'll basically end there. I think maybe it's time for food, but I'll be available to you for any questions or that you might have. Or the purpose of my coming here today was to interact with you. I don't think I feel qualified to, let's say, inform you about sort of what's happening in Pakistan. I think all of you are as aware as I am of what is happening there. So I look forward to sort of our interaction today, and it's always a pleasure for me to come to Toronto. It's a place where I'm welcomed as I'm not welcomed anywhere else. So with these few words, I'd like to sort of and yes, I think there are people who want to ask questions. As has been said by the Prime Minister, that we want free trade, not aid. So what has been done after the change of the government from the NSA point of view, to improve the trade relations between Pakistan and Canada? Because a lot of potential, and I mean as economists and working as economic advisor with many integrated tradition in Pakistan. So there are certain innovative ideas. Surely, I know, since beginning, we are having the acute shortage of the foreign exchange. So there are alternate financing available, yes, quite a few things available, and innovative ideas by the best corporate and party. So is there any directive from the Ministry of Commerce from that point of view, and something has been done from that perspective? Well, as I said, this is a new government. Sort of, it has important ideas. It has called important meetings, important people to come up with an economic plan, which will depend a lot on, let's say, the other situation in the country, whether it's security and law and order. But the government has come up with comprehensive plans, sort of in terms of increasing trade. But much of that will depend, let's say, if we can diversify our exports. As you know, sort of we rely something like 75% on the export of our textiles. The case that we've been making in Canada is that our textile export have suffered because you have LDCs, the least developed countries, that enjoy sort of almost a zero-rated duty. We export something like now about $300 to $400 million worth of textiles into Canada. Bangladesh being an LDC, I think it's almost $1.5 billion. And this has been in the last few years. So those are the kind of things that we need to work out. We've made a strong case. The same with the EU. We need a preferential treatment within the EU on par with the LDCs, for us to be able to gain a strong foothold in markets in Northern America and Europe. So as I said, strong directive issued to all the embassies in terms of attracting investments into Pakistan, in terms of increasing trade. But as I said, you have to give a little time to the government and these policies to fall in place. It may be a little too early to judge them. But certainly the one thing that was done, sort of, I think commendable, was to ease the circular debt, which will enable, let's say now, the production of greater electricity,
which in turn will then have an impact on the economy. And in that respect, I think it was unavoidable to take the IMF loan. As I said, that's a bitter pill that sort of we had to swallow, but there was no alternative at this stage. You had a huge circular debt that you had to return. You owed, you had a huge debt for a long time, so you needed some breathing space there. But these are the kinds of things that the government is doing, and provided the other pieces fall in place, then I think you have a good chance to give a boost to the economy and for it to recover. As I said, sort of areas like the stock market, maybe the property market, those are areas that are thriving in Pakistan. But of course, ultimately you have to develop a strong industrial base for your economy to move forward. जी जी मैं 89 से, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं, मैं 89 से राष्ट्रीय कनाडा रहा। मैंने आज तक कोई ऐसा कौंसल जनरल नहीं देखा कि जो इमरान अली चौधरी ने आज तक काम किया है इधर। इससे पहले मैं आज तक मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा। मैं उनके लिए दुआ गो को हमेशा के लिए यहाँ रहें, हमेशा दुआ करता रहूँगा। We hope that all our diplomats can be like that, huh? Definitely. Yeah, I'm happy. That's why, you know. कहा कि हमारे सफ़ीर आ रहे हैं, क्यों ना मैं उनको अपने गरीब खाने पे दावत दूँ। तो आपको पता है कि एक को दावत दी, दो को दी, तीन को दी, सारी कम्युनिटी में आग की तरह ये खबर फैली है कि हमारे सफ़ीर आ रहे हैं। ये नामुमकिन था कि मैं अपने गरीब खाने के अब तमाम दोस्तों को दावत दे सकता। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ के हक में बात करता है। आप खुद जज कर लेते। आज से 7 साल पहले आप यकीन कीजिए, जब वो यहाँ से जा रहा था उसकी बीवी रो रही थी कि पता नहीं ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये हकीकत बात है। जब मैं उसको इस्लामाबाद लेके गया, जो कि पार्लियामेंट हाउस पे जो सड़क जाती है, जो कि इतनी खूबसूरत सड़क है, वो इतना हैरान हुआ। जब मैं उसको पहाड़ी के ऊपर लेके गया, उसको मैंने शहर दिखाया, उसको इतना अच्छा पाकिस्तान लगा। जब वो मेरे साथ लाहौर आया, फिर वो कराची गया, फिर हम चाइना गए, वापस आए। इसके बाद दोबारा वो मेरे साथ पाकिस्तान गया, उसने वहाँ से जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। दोबारा हम गए हैं तो उसने यानी तमाम ट्रिप का खर्चा भी बचा और उसका ट्रांसप्लांट हुआ। कुछ महीनों के बाद कहने लगा, यार मैं चाइना जा रहा हूँ तुम्हारे बगैर, लेकिन पाकिस्तान से होके जाऊंगा। अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में क्या खासियत है। और आप पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, हम पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जराइम है, ड्रग्स है ना, कत्ल है ना, और देखिए कितनी इनके जो जराइम है, जैसे एक मेयर ने कहा हर प्रोग्राम में हमारा एक वीडियोग्राफर बड़ी मेहनत करता है।